Right, welcome to the seventh lecture for the course Mathematics for Machine Learning. New development between this course and the last one. क्या हुई है नई development? Physics में कुछ हुआ है या काफ़ी कुछ हो गया है? This is what happened. Nobel Prize in Physics went to work in machine learning, right? Hopfield is among the first people to bring in the idea of memory. वो जो हमने recurrent neural networks पढ़े हैं ना, Hopfield neural networks भी हैं जो से पहले के हैं थोड़ा. So ज़ाहिर है नोबेल प्राइजेस में between the discovery and the prize तो काफ़ी time होता है, 20-30 साल होते हैं, because the idea is that they want the idea to mature, to be proven, and then to prove itself useful, because the will of Alfred Nobel, who started this prize, was that people who have done these things for the benefit of humanity. तो उसमें वो application का भी इंतज़ार करते हैं, वेरिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का इंतज़ार करते हैं, और फिर एप्लीकेशन का भी इंतज़ार करते हैं मोस्टली, राइट. द शॉर्टेस्ट टाइम अमंग द शॉर्टेस्ट टाइम बिटवीन डिस्कवरी एंड गेटिंग अ नोबेल प्राइज इज़ प्रॉब्ली ग्राफीन जो फिज़िक्स वालों को सब उसका बहुत शॉर्ट टाइम था, काफ़ी जल्दी मिल गया था, वरना काफ़ी टाइम लगता है. बट सो the Nobel Prize this year in physics went to the pioneers of machine learning, because the Hopfield network is based on statistical mechanics, physics की जो चीज़ है ना, right? और overall what I want you to also notice here is that physics का ये है, that tells you how diverse this whole thing is. Yeah, maths, physics, यानी आप कहाँ से inspiration लेते हैं, what kind of mathematics you use, brain का, physics का, and then you create this new math or implementation of it, right? So don't consider yourselves in silos कि मैं physicist हूँ, मैं mathematician हूँ, मैं, right? A lot of good things happen in the overlap. Okay, so I think it's a good lesson for us, and congratulations to both of these. Hopfield का मैंने आपको दिखाना था जब मैंने recurrent का बना रहा था slides, but I felt that वो ज़्यादा हो जाता फिर वो, right? So I stuck to the key steps. But anyway, we will see maybe when we go to neural networks, we will see in the history of recurrent neural networks this work. So with that, we can start our lecture now. What were we doing last time? So let's see. So we had stop कहाँ हुए थे हम, recurrent नहीं, वो तो पीछे रह गया ना, उसके end पे हम फिर history में आए थे थोड़ा सा, right? And इसमें हॉपफील्ड का जिक्र आता है बहुत, but I skipped it because of time shortage. बस ये ध्यान में रखें, याद है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, मॉडर्न एप्लीकेशन. मेमोरी है, उस पर क्या बिल्ट है, नया जो ट्रांसफार्मर. ये जो आम बंदे को जो रेवोल्यूशन नज़र आ रही है, दैट इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एंड दे आर बिल्ट ऑन recurrence, and recurrence is built on the idea of memory, yeah, in there. So that's what we did last time. We saw a bit of history, and we went through, आपको ये याद होगा सारा कुछ, from Turing to the first neuron to, let's say, the overall history, and then we decided that okay, we just need a very quick primer on Python. We had discussed this one, why we think it's very useful for machine learning, why it has become so popular in machine learning, and this is where I want to start now.
This is going to be probably the shortest introduction to coding or Python, yeah, because that's not our goal here. You should know coding at this stage. If you don't, just sit down and work so hard on it that you get to know it. Okay, गुंजाइश नहीं है अब, yeah. There is no time to relax on this anymore. Yeah, so वैसे भी ग्रेजुएट स्टडीज़ में अक्सर कोर्सेज के लिए बैकग्राउंड रीडिंग या रीडिंग नहीं तो रिवीजन तो करनी पड़ती है, सही है. बैचलर्स में हो सकता है यू स्टडीड समथिंग इन द थर्ड सेमेस्टर, नाउ यू हैव अ ग्रेजुएट कोर्स इन दैट, तो बीच में तो है ना 3 साल हैं रफली. सो और नॉर्मली ग्रेजुएट स्टडीज़ में यू नीड टू read up a lot, yeah. So in this case, because of the nature of this course, it's like 3-4 दरियाओं को कूजे में बंद करने वाली बात है, right? So there is conventional machine learning, there is modern machine learning, the neural network, then there is the math, linear algebra, analytical geometry, vector calculus, there is optimization, probability theory. ये हर एक अलग कोर्स होता है, yeah. So we want to see their common points. पर जाहिर है कॉमन पॉइंट्स देखने के लिए भी हमें वी नीड टू रिवाइज थिंग्स, या, एंड रीड अप अ लॉट. सो कोडिंग के हवाले से पाइथन, आई कैन स्टार्ट हियर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नो आइडिया ऑफ कोडिंग? ऐसा कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, कभी ना किसी लैंग्वेज में ना की हो. फोर्ट्रॉन, बेसिक, सी प्लस प्लस किसी में की होंगी, राइट? सो प्रोग्रामिंग, इफ़ यू डोंट नो, so I can suggest that you start right here. Block coding, this is the website codeforlife.education. Okay, you can go to this site and you can choose, in there they have this idea of block codings. आप block रखते हैं instructions के, right? And they will develop your sense of the different structures in coding. सही है, लूप्स की सेंस बनेगी आपकी, कमांड्स की बनेगी, इस तरह की वेरिएबल्स की कुछ बनेगी, सी इंक्रीमेंट x by 1 and those things without actually type, and then it will in parallel it will show you that what you wrote, what you have drawn or put the block here for instruction, how would have that been written in Python. या शुरू में होता है आपको समझ ना आए फ़ौरन, पर ये उनके लिए जिनको अभी तक कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है. सो इट्स वेरी गुड वेबसाइट. It's for school kids, so you should be able to do it in like 2 or 3 sittings. ज़्यादा टाइम महीने का प्लान ना करें क्योंकि ये तो अभी मतलब पीछे जाने वाली बात है, right? So this is the stuff the world is doing in school, middle school की बात कर, high school की बात नहीं कर, ठीक है? So if we are not there, fine, we can get there. आपको और तरह से चीज़ें आती होंगी, you will quickly understand it. अच्छा, if you know that part, or if when you're done with that very quickly, then come to this part where you have to write the tasks in Python, and there is a slightly more advanced game. Okay, इसमें challenges होंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, then write the codes for those. Okay, so very simple basic challenges, but this time writing them in Python. So again, try this. When you're done with that, or if you find that okay, this is too easy for me, I don't need it, then go to this one, which is the W3 schools, and they have a very extensive tutorial on Python. Yeah, so this will probably help you prepare for this course mostly, right? तो शुरू आपका यहाँ से होना चाहिए. अगर आपको Python थोड़ी सी भी आती है या वैसे कोई प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है किसी और लैंग्वेज में, C++, then you can also start here. But the previous 2 steps are, if you have no idea of any language, coding की sense नहीं है, and if you have very little idea of some language but not much, and then you also want to learn a bit Python, फिर अगर आप यहाँ direct आ गए तो आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, right? So it's best to go in those steps. So today I'll be going through some of this part here. Installing Python, you can just go to their website, the official website, and download it from there, python.org, or you could, okay, I don't see the link here, I think I had put a link. Anyway, python.org, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, official. So क्या हुआ? हाँ, वहाँ से भी सही है.
So there are many ways you will find it, or you could even do it initially, use an online version. Yeah. So there are many online compilers or editors, just go there, but it's not recommended इसलिए कि उसमें आप code save नहीं कर सकते, right? या मतलब limitations हैं. So it's best to install it immediately and get working on this. So what are the key aspects of learning any language? Now I'm talking about programming languages. Yeah. इसका ताल्लुक ऐसे natural language से भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल for at least for programming languages, what I like to think जो main blocks हैं program उसके वो ये हैं, 9 of them. You should know how to give input to the machine and get output from it. उसके बगैर तो कुछ नहीं है ना, हमने कोई thinker तो नहीं बना रहे जिसने किसी से बात ही नहीं करनी, right? You want to be able to give it data and you want to be able to get data. So you should know how to do these operations, input output operations with the machine. Then you should know how the machine is going to handle that data. Yeah, handle से मुराद अभी हम processing की बात नहीं कर रहे कि वो जमा करे उसको. Handle is how does it store it, where does it store it, how does it retrieve that data. Yeah, so वो आपको आना चाहिए. Thirdly, of course, in general, what do you want the machine to do with this? Input क्यों देते हैं आप उसको? कुछ ऑपरेशन कराने होते हैं ना, जो आपसे नहीं हो रहे होते या हो सकते हैं पर it's too cumbersome, time लगता है. You want the machine to do those operations. So definitely you need data manipulation. किसी फॉर्म में उनका स्क्वायर निकाले, उसको एवरेज निकाले. So you need manipulation. Then you should know when you're going to direct the machine how to control the flow of the machine's logic. इससे मुराद ये है कि you should be able to tell the machine if this happens, if you see a number this big, do this, if you see that, or until you see a number bigger than 6, keep asking. Yeah, this is logic. If क्या होता है, logic होती है ना, अगर ऐसे है, मंतक है ना. Yeah, so while, until, unless, ये सब क्या है, logical बातें. Yeah, until वो इधर कॉल आती है आपने कुछ नहीं करना. ये क्या है, आपकी लॉजिकल फ्लो है ऑफ योर एक्टिविटी. आपकी एक्टिविटी को एक कंडीशन मिल गई है, ऐसे ही. सो यू शुड बी एबल टू कंडीशन योर कोड. थर्ड, फिफ्थ इज टू हैव वेज टू इम्प्लीमेंट कोड्स मोर एफिशिएंटली. या और इसमें आएंगे फंक्शंस वगैरह, क्लासेस, मॉड्यूल्स, दोज थिंग्स. लास्टली, this may seem not very important, but believe me, it's the most important thing. इससे ना आप 10 मिनट में गुजर सकते हैं. सारा पढ़ लेंगे बस. जब तक ये नहीं करेंगे ना, लॉक नहीं होगा वो, right? So you should know where to get help. I want to do this in Python. How do I do it? Yeah, and then you should practice. Practice is you should have enough rich problems that you want to implement there. Yeah, so I'll give you some ideas how to do that. So let's go through these very quickly. As I said, my goal in this course cannot be to teach you programming, right? Lekin just for the sake of completion, यहाँ मैंने कुछ slides में material रखा है. You can view that later also, or I'll take you through those very quickly, not spending too much time on those. So पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी? You should be able to give input and get output. Yeah, so what does Python provide you for that? Very simple. You want to display on the screen, just print command. इसको क्या कहते हैं हम? Command है ये, ठीक है? So you can call this the argument, yeah, or the expression or whatever. So print is there. It also lets you print this way. So you say Python y, you put them in variables, store हो गया, and then you say print x, y, z. Yeah. Then there is a way to say I want to include some changing part in my output. Yes. So there is a way, we call that making f strings. When you put an f here, you're telling this guy that I'm going to include a variable, something that will change. So based on the value it currently has, it will print my name is John, I am, not age. It will not type age. It will write 36. Yeah. What will happen if I take away this f?
What will it print? एज लिखा AGE लिखा हुआ आ जाएगा और वो ब्रैकेट्स भी आ जाएंगी, ठीक है, उसको तो नहीं पता है ये क्या है. So f is a modifier. It's telling the compiler that there is a variable supposed to come here. उसकी value उठानी है, ठीक है. So these are simple input output. You could maybe interested in printing part of something. Yeah. So this is important. Indexing. B has this string inside it, hello world. Yeah, ये quotations इसका part नहीं है, they just tell it that it's a string. Yeah, so the way Python starts indices is from 0. अब ये बहुत बड़ा challenge होगा, MATLAB कहाँ से शुरू करता है? 1 से, ठीक है, तो Python का 0 से start होता है. So B0 is H, B1 is E, and so on. ठीक है, so you want to print part of a string maybe, okay. ये सब क्या है? In simple input output. You can use f strings in more smart way. You can use it to calculate things and print the result. You can. This was all output, but input. Yeah. You may want to ask the user to give something. What's your name? What's your age? User ने input करना है. So very simple. Username is input. Enter username. ठीक है. This string will show on the screen. And then the user will enter their name, and you say print username is plus username. This is the variable you just stored. Okay, so very simple input and output. Yeah, so you could print the first character also. But this input and output is just for fun or small things. You normally, if company का data है, you will not ask a clerk to बार बार लिखा input the first value, now input the second value, ऐसे तो नहीं होगा. Yeah, it won't be efficient. You want to work with files. I create an Excel file or some other CSV file and I want that to be read into the machine. ये नहीं कि मैं एक एक करके क्या हाल है और क्या हाल है और सुनाओ, right? So this is what you actually want. So in that, working with files is part of input output, and that is the input output we normally want to use. Yeah, so you should be able to know how to open a file. Let's say there is a file demo file.txt, just open. If you want to give its full address, same folder में नहीं है, it's a very standard thing. Then you can put this in F and print F read. So you want to show the file. Yeah, whatever was read here is this is called a handle. यार आपको पूरा जानने से नहीं, लेकिन अक्सर लोगों को पता होता है हैंडल है ये. Now it's saying the file is now in this handle, so you're telling this handle to print the file, read it for me, like show me on the screen. Yeah, so now there are other tools available to you to read parts of files, read one character, read a line, read the fifth line. If you do this, first it will read the first line, then again the second. So you can read a file line by line. And these, by far, these are not the only tools. I'm just telling you some of them which are available. और मज़ीद कहाँ से जानते हैं कि आप again help, right? Yeah. Documentation से, online forum से, और जो अगर आप W3 वगैरह पे जितनी पढ़ी है. You can close a file, read parts of it, and then close it like that. So editing files, of course, you may want to update a file. Yeah, you have calculated, you have read a file which had 6 columns, and what you wanted to do was make a 7th column which gives the average of each column, each row. Yeah, so now you want to append that. So you should be able to write to files. So there are different ways you can create a new file. It will give you an error if it already exists. There are different parameters you can use. You can write to a file. A means append. Append क्या होता है? Appendix होता है ना? Connect जो करते, मज़ीद जो लगाते. Yeah. So it is saying just add a new line basically to whatever is there already. You could overwrite it with W. ठीक है, पहले से अगर उसमें कुछ है तो वो erase हो जाएगा और नया आ जाएगा. ये सारे built in हैं. ये basically built in parameters हैं, right, of this open.
जब आप किसी कमांड की हेल्प लेंगे ना, तो वो इट विल टेल यू इट्स सिंटेक्स एंड देन इट विल टेल यू द डिफरेंट पैरामीटर्स और मॉडिफायर्स दैट यू कैन यूज़ विद इट, और वहाँ पे होती है डिटेल ज़्यादा फिर. या सो अगेन दीज आर नॉट द ओनली वंस, बहुत सारे हैं. ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू शो यू ऑल ऑफ देम. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी, और आपको अगर पता हो कि हेल्प कहाँ से मिलेगी तब आप हेल्प लेंगे, तब वो सामने आएगा और जेन में लॉक होगा. राइट सारे पढ़ के आप पूरे डिक्शनरी पढ़ लें इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ लें, ठीक है, हो जाएगी इंग्लिश यूज़ नहीं हो सकती. सो दैट इज़ जस्ट टू टेल यू कि हाँ ऐसा कुछ होता है. यू कुड रिमूव folders or maybe remove directories, remove files, etc. For that it has a built-in module or library called OS. उस पे हम आएंगे, ठीक है. But there are ways to remove folders, remove directories from your working directory or somewhere else. Yeah. So all of this was what? पहली basic requirement, input, output. क्योंकि उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता. मशीन को हमने कुछ देना है, उससे कुछ लेना है. या अंदर क्या होना है वो तो बाद में आएगा ना. अगर हमें इनपुट आउटपुट ही नहीं करना आता, फाइल रीड नहीं करानी आती, आउटपुट राइट नहीं कराना आता, या इतना इनएफिशिएंट है कि एक एक करके वो वैल्यू मांग रहा है हमसे, तो फिर मसला है ना. यू वोंट बी एबल टू स्केल इट. सो data handling, how does this machine, this software, this language, how does it handle the data? कहाँ रखता है ये, किन forms में रखता है उनको. Yeah. So here we have simple variables में रखता है, ठीक है. This is a variable, this is a variable, this is a numeric value, this is a alphanumeric or character string कहते हैं normally, and then you can show their values. Now there are other ways to store data. You can assign multiple variables in one go. Okay, then there are, you can assign variables with a collection. We will see that later. But you see, fruits is apple, banana, cherry, and then you can put those one by one in different variables. So it handles them very nicely. Python is very nice with that because it knows, the way the machine learning community works, there, right, lots of redundancies in there, lots of things. So you don't want to, ये काम MATLAB में करना हो मुश्किल होता जाता है right. So this is very natural, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, नज़र आ रहा है, right. So what kind of data it handles? String, ये जो थी, this one is a string, yes, and you have, let's say, yeah, so there you have a string, this is a number. Now in numeric types you have three types: integer, float and complex. Integer होगा तो वो decimal के बाद सब कुछ अगर आया भी तो drop कर देगा, 3, 7, 9 so on. Float is 3.555 and usually there are ways to control up to how many decimal points you want to go. Complex, you know, it has the J with it. Yeah. Sequence types, we will see those soon. These are collections. So these are single variables and these are different kinds of collections. This one also. Set. Boolean क्या होता है? Boolean algebra. True, false, right? Logic का जो होता है, right? So you have a Boolean type also. Good. Then you could also want a random variable, right? So you need a deterministic आपको चाहिए हो. So there are ways to generate random variables also. Some examples: X, hello world, integer, float, complex, list, tuple. We'll see these now. Basically these are mostly the collections. ये single है, yeah, single string, single so and so, and these are collections. This is a bit more advanced. I'll skip that for now. Boolean तो यार आपको पता है, simple है, true, false. So collections. Now Python has 4 kinds of collections. Yeah, collections of variables. Yeah,
and they are list, tuple, set and dictionary. हर एक की अपनी है. I won't go through the full details. Here is a summary. List is a collection which is ordered and changeable, allows duplicate members. ठीक है? So for example, how do you define a list? Basically you say list square bracket आपने use करनी है. ठीक है? और उसके अंदर बजाय इसके कि you say x is abc, y is 3 4, c is कितने वेरिएबल बनाएंगे? मुश्किल है ना. So this guy says okay, throw them. और ये mix भी allow करता है. It can be a mix of strings, integers, floating, boolean, complex, सब कुछ डाल दें. ठीक है? And it allows duplicate members also. Okay. Then there is tuple. Now a tuple किससे क्या distinction है? Parenthesis. Yeah. Again, it can take strings, integers, and booleans, but it does not. It is ordered. It's not changeable, basically. Now you might think ये क्या right? इसका ताल्लुक जो है ना faster access से है, memory access. Yeah, to make the code more efficient. If you know what I am inputting is never gonna change. There is no point having some algorithm keep in mind कि कहाँ जाके change करना है मैंने उसको. Faster हो जाता है. Otherwise कोई मसला नहीं है. कोई इतना बड़ा वो it's not मतलब changeable और unchangeable में mathematical कोई बात नहीं है. ठीक है? It's a coding efficiency. Yeah. So वो देख के परेशान नहीं होना आपने कि यार ये इतना बड़ा क्या फ़र्क आ गया. Set is a collection which does not allow mainly फ़र्क पिछले दो से main फ़र्क क्या आ रहा है? Repetition doesn't allow. Yeah. And it's unindexed. Unindexed mean, for example, a list is indexed. So if you ask for the third variable in the list, it will always be true, or the fourth will be 40. इसमें आप मांगेंगे ना third variable, कभी apple मिलेगा, कभी banana मिलेगा, कभी cherry मिलेगा. ठीक है? अब ये क्या बोला है? So they are saying if you leave it unindexed, there are ways to I can do it faster. That's all. But if you feel that you need the index, don't make it a set. List बना ले. Right? You have the choice. So you will see that this is basically to give you flexibility in different things. अच्छा, इन तीनों से थोड़ा सा जो different है, बड़ी clearly different है, इनका आपस में भी फ़र्क है छोटे छोटे ये ऊपर लिखे हुए. Dictionary. Now this you can see a lot of benefit in here. In dictionary, पहला तो क्या था फ़र्क? अच्छा, square bracket, parenthesis, curly bracket, and again curly bracket. But now how do we distinguish between these two? ये pairs में लिखी जाती हैं with a colon. So you say brand is Ford, model is Mustang, year of the model is 1964. Now notice print dictionary brand. तो क्या print करेगा ये? क्या print करेगा? Brand, हाँ बिल्कुल Ford. Yeah. So it will show you the brand. So you can already imagine. याद है हमारा in data analytics and in machine learning, a lot of things are labeled and linked. Yeah. So it already has those constructs in it to help you. Assignment या उनको pair करने के लिए use होता है. So it अगर आप नहीं ब्रांड नहीं होगा, फोर्ड होगा तो ये पेयर कॉलन ने इनको पेयर कर दिया ना. राइट. सो the first item, yes, is the key you call, or that is the value of the key. Now normally what will happen in data, keys वही रहेंगी, values change होती रहेंगी. एक और गाड़ी आई, उसका भी brand होगा, कोई model होगा, year होगा, लेकिन different हो जाएगा. Right. So this is what we call dictionary. Yeah. So you just see them as flexibility in handling your data. That's all. और जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे, मोस्टली यू विल गो विद लिस्ट्स स्टार्ट में. या जब आप थोड़े एडवांस कोडर हो जाएंगे, फाइलें बड़ी होती जाएंगी, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एफिशिएंसी. या इन डेटा एनालिटिक्स से आप स्टार्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन इन सम केसेस यू मे वांट टू वर्क विद डिक्शनरी ऑलरेडी. या ओके. Yeah, so you can work with the collections. You can show okay, print this list first. Value in there. क्या है पहली value इसमें? Apple. Yeah. So क्या हुआ?
अच्छा हाँ 0 से शुरू होता है, yeah right 0 1. So it's banana, and in this one also you can print this list. You will see it will give you the whole list if you want to print it. You can change items in the list. So you can say okay, replace this one banana with black currant. Yeah, so you can do that. There are ways to update that. हमने कहा था tuple cannot be changed, yeah, but there are tricks. You can convert it into a list, then change it and then change it back to a tuple. But it will be inefficient. तो ये कोई बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर आपको ज़रूरत पड़े, किसी और कोडर ने पहले से टपल बनाए हुए हैं, आप बार बार नहीं चेंज करना चाहते तो change it once to list, do that. And so there are tricks, but overall the idea is that if you believe you will need to change, then don't go for tuple, yeah, go for a list. Okay, so अब ये आ जाते हैं थर्ड पार्ट. पहला क्या था? This applies to any language. किसी भी it doesn't Fortran, C++, इनके लिए नहीं है ये, Java, Python, ये सब लैंग्वेजेस का यही है. Input output, data handling, and now data manipulation. So this is the part we actually want to do. असल में तो हमने ये करने होते हैं ना. So वो तो necessary evil है, मजबूरी है, कहीं स्टोर तो करना है ना उसको किसी फॉर्म में. असल में तो हमने ये कराने होते हैं काम. So data manipulation, you can have arithmetic, assignment, comparison, all that. So arithmetic में क्या है? You want to add them. Yes, subtract, divide, multiply, so on. These are not the only ones, by the way. मैं सिर्फ चंद samples दिखा रहा हूँ. Python assignment. What are the assignment operators? Equals. अच्छा ये shortcut है जो C++ जानते हैं उनको पता है already. It's just a shortcut. It's saying x equals x plus 3. Yeah. So x plus equal 3. Because this kind of updating is often needed in coding. So the coding community long ago came up with this shortcut. C++ में plus plus वही है, I plus plus करते हैं ना, I equals I plus 1, उनका तो और भी short है इसे, right? So comparison operators, equals, x equal y, not equal, and so on. Yeah, इनके जवाब क्या होंगे? Boolean होंगे, true false, right? Normally like that. So then you have logical operators. Logical की समझ आती है? It connects these and. So if I give you a number and the number is less than 5 and less than 10, okay, जो कि इस केस में कोई इतना यूजफुल नहीं है. You could just say less than 5 because less than 5 will also be less than 10. Yeah, but anyways, often you need to combine logical. ये basically इनको अक्सर combine कर रहा होता है, right? Into more elaborate expressions. Then there are membership operators. In x in y, is x a member of set y? उसके अंदर है या नहीं है? Not in. It's very useful membership. So I didn't show you all of them. You can see बाद में जब जरूरत पड़ेगी. Then there are methods. Methods are kind of more detailed operators. You can add to list, remove items from it. You have methods for tuples, for sets, for dictionaries, loop through them, all that. So it's good to go through these methods also. Yeah. So you can see those. There are other methods that apply, encode, count. There will be length, so many more. So बताना ही चाह रहा हूँ कि we are not limited to these operators, ये जो, right? There are other operations that don't fit into your basic mathematical operations. Yeah. So for that we have those several methods there. Yeah. So increase a list size, decrease, all that. You have it. So for example, here let's see examples of using these operators and methods. This is saying the best print free in text. Yeah. So it will give you true or false. Free उसमें है या नहीं है. And then you ask expensive, not in text. Again, same thing. You can use a method to find the length
of a string. उसके अंदर कितने character हैं उसके अंदर, right? So you can use that, and then you have so many other methods. ये कौन सा नंबर था? So input output हो गया, data handling हो गई, how to put it in different list tuple, and then we said we want to operate on it. Yeah, mathematical and logical and फिर दूसरे operations and methods के जो. Now we want to write a code to tell the machine how to do those operations, how to, when to take input, when to give output. आजा के है तो सारा logic लिख लिया ना आपने, तो उसके लिए आपको logical flow control की समझ होनी चाहिए. उसमें जो key चीज़ है वो conditions and loops हैं. Yeah, so condition क्या है? Basically you're telling the code to choose which part should run, right? So that is conditional flow of the code. If b is greater than a, do this part. If b is okay, doesn't want that. Pen. Yeah. If else if they write it elif, ELIF, ठीक है, वो SE से काफ़ी टाइम बच जाता है. I don't know, बचता है कि नहीं है. Elif है, else if, and then else. So you are logically controlling the flow of your code. Yeah, and that is definitely needed everywhere. So you can control in different ways. If A and B, you can combine the operators. Interestingly, you can do it like this also. If Apple in this list, yeah, तो ये हम membership operator use कर रहे हैं, ऐसे ही है ना. यहाँ पे आप you're using assignment operators and logical operators. You mix them with conditional flow. Yeah, so सारा कुछ इकट्ठे आता जाएगा. If is very straight, right? It tells you if this, then that, like that, or else if like that. We could want to do things in loops. Instead of doing one time if this then that, yeah, we could maybe say while, until, those kind of things. So you have the while here, while I is less than 6, repeat this. ये क्या कर रहा है? अभी हमने देखा था, हर दफ़ा उसको एक से I equals I plus 1 किए जा रहा है. Yeah, and increment the sequence with 3. Now the while thing, yes, may be something where you say, okay, just keep doing something until a condition is met. Whereas for, it might be that you already know that you want to go through certain set or certain list one by one. Yeah, and you just tell them, okay, just pick the first element, do this, then pick the second element, then do this, and then. So in that case, you can use for loop. आ जाके मकसद क्या है? If, then, for, while, क्या है ये? They are in your hands, some tools to logically control the flow of your algorithm, right? और ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, definitely. So then there are more advanced version. You can break a loop in the middle. You can tell the loop to skip a step. Okay, तो ये छोटी छोटी tweaks हैं, ये आपको आ जाएंगे इस तरह से. कुछ मैंने यहाँ डाल दिए हैं ताकि आप जब slides वगैरह देखें तो easy हो. But as I said, जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, और तब आप ढूंढेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, तब ये आपको याद होगी. अभी नहीं है. ठीक है. So without practice and without going for help, it's not much you will get. Yeah. Having done all those things, somebody could write if, then, if, else, if, elif, 100 लाइनें लिखी हुई हैं. ठीक है, बोंगा से तरीके से लिखा. Yeah. So when you want to write big codes, you cannot afford to be that. छोटा कोड है, चलें कर लिया आपने. Yeah. What you want is to be efficient in the way you code. Yeah. And in that, you have several tools at your disposal: functions, classes, modules, libraries. All of them, for me, basically the idea is to do things more efficiently. Yeah. So how do functions help us do things more efficiently? Maybe there's an operation that you need to call again and again, need to do it again and again. Yeah. Now you may say, okay, then put it in a while loop. लेकिन आपको नहीं पता कब कब ज़रूरत पड़ेगी. So you want to be able to call it, on call रखा हुआ है इसको आपने. ये भी repeat होता है, but different from while, for, क्यों? वो तो एक दफ़ा
हो जाती है, राइट. दिस गाय को आपने सारा वक्त स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, जब ज़रूरत होगी आई विल कॉल यू, राइट, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी बार बार डिफरेंट टाइम्स पे. सो whenever you have a piece of code that you realize that I will need it from time to time, I'll need to call it to do something for me, yes, then functions are an efficient way of handling it. That's it. Yeah. So define a function, my function x. You're saying this function takes a value, input as x, and then returns this value. Then there are smart ways or more advanced ways of handling functions, like creating or giving it more input, more output. पूरा आपको कितने inputs देने हैं, कितने output देने हैं, you can control all those things, right? But again, the key idea is the same. It's something that it's some code, piece of codes whose services you need from time to time, and you want to keep it on call. So like, be ready, I will call you. Yeah, when you call it, you send it some values. Okay, now I have these values. Please manipulate them, operate on them, and give me the response based on the things you are supposed to do. Yeah, so वो आपको करके देता रहेगा. Classes, object-oriented programming. You don't need to know OOP, object-oriented programming, for this course. Okay, अगर आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है. So I won't spend time on it. ये तो पूरा एक field है ना, right? So it's not really necessary for this course, but again, for me it falls in this efficient coding scheme. ठीक है, फिर वो inheritance, वो सारा कुछ फिर लंबी कहानी है वो. So, but modules and libraries, yes, you will need to use. Modules and libraries are basically वो जो हमने function define किया था ना, वो किसी file में पड़ा होता है. What if you need such a big function that you want to make a separate file of it, yeah, and then call that file, load that file, whole file you want to load it every time you want to run your major code. Then we can save that as a module. So you have user-defined modules. You won't have too many, but the modules that are predefined by the Python community or included in Python, they are the ones you will be using a lot. मसलन ये math इस Python इस module का नाम पढ़ें, कितने बड़ा field है, math पूरा ही अंदर रख दिया, काफ़ी कुछ, right? So this is predefined. इसके अंदर functions already लिखे हुए, आप इसको call करेंगे. Math, when you call it, it's loaded. Then you say, okay, now math, do square root for me. Math, find roots for me. Math, do this for me, right? So you call it this module, the functions in this module. There are other modules for, that was for math, this guy is for expressions, strings के लिए अलग है. इस तरह याद है, one of the powers of Python I told you was the huge number of modules, libraries, and those, yeah. So sometimes then you will want to combine lots of modules into one big set. उसको हम लाइब्रेरी का नाम दे देंगे. तो आ जाए कि क्या है, सारे फंक्शंस ही, एक फंक्शन आपने कोड के अंदर लिख लिया, वो फंक्शन है. फंक्शन यू सेव्ड इट एज अ सेपरेट फाइल .py, ये मॉड्यूल है. आपने किया तो आपका मॉड्यूल है, पाइथन में वैसे इंक्लूडेड है तो इट्स अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल. Then if you put lots of modules together, you get libraries. This is where what you will be using mostly, yeah. So इसमें हमारे लिए कौन सी relevant है, machine learning की होगी, mathematical functions की होगी, then bit of this, yeah. I think not all of them, but at least these you will use, yeah. कौन सा? मैटप्लॉट, या. सो बेसिकली ये हैं वही जो ओवरऑल डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग में सारी यूज़ होती है, या. सो राइट, लास्ट पार्ट, गेटिंग हेल्प एंड प्रैक्टिस. सो python.org, there it is. They have very extensive help. Then you can learn from here. Inside the Python install की हुई है ना, so if you know the command but you don't know how to use it or what different switches, parameters it allows, then it's very useful to read this help print, और वो पूरा उसका बता देगा. You can print like this, print like that, use this, like that.
Yeah. So what I want you to do from here on is this. Find Python forums, take Python basic tutorials online अगर आपको नहीं आती जो मैंने already बता दिया. Then take Python machine learning tutorial. वहाँ पे मैं आपको थर्ड स्टेप तक ले गया था ना, ब्लॉक कोडिंग, फिर लिटिल बिट पाइथन कोडिंग, देन W3 स्कूल में रीड थ्रू द पाइथन ट्यूटोरियल्स. बट देन एक्चुअली तो हमने यहाँ आना था, राइट, मशीन लर्निंग एंड मैथमेटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल बिकॉज from maybe next half of this lecture and or maybe next lecture, a lot of or most of what we'll do will be mathematics. Linear algebra आएगा, vector calculus. आपने क्या करना है, जो हम टॉपिक समझते हैं ना उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है. ठीक, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम बेसिक्स, बट यू शुड नो हाउ टू गेट दैट डन. इन लाइब्रेरी कॉल होती है, कर लें, उससे हो जाता है, कर लें, बट यू शुड बी एबल टू डू दैट टास्क, राइट. और ये आपने खुद करना है. अब खुद से मुराद है कि यानी क्लास में नहीं हम इसको, राइट, बिकॉज you have to focus on the mathematics. So this is very critical. Take the machine learning tutorial also and do that. Yeah. So any questions or thoughts before I go to the next topic? By the way, this मैं बताता हूँ अभी, this ends one module of the course. Yeah. कोई है question अभी? तो ग्रुप पे लिंक भेज दें, ठीक है. आई हैव अपलोडेड द पावर पॉइंट एंड लेकिन मैंने ग्रुप में मैं नहीं डाली. कोई डाउनलोड करके भेज सकता है उसमें ग्रुप में, राइट. मैंने ड्राइव पे रखी थी, आई वांटेड टू पुट फ्रॉम देयर, पर ड्राइव, गूगल ड्राइव का मसला ये कि वो मेरी जो मैं खुद टाइप करता हूँ ना, मैथ टाइप, वो गायब कर देता है. तो आई हैड टू अपलोड इट इन archive.org. सो वहाँ से डाउनलोड करके सबको ग्रुप में शेयर कर दें सारी स्लाइड्स, ठीक है. अभी तक जितने लेक्चर हैं ऑल इज़ अपलोडेड. सो not just the videos, I mean the actual PowerPoint and PDF are also uploaded. Okay. और इसके अलावा जो helping materials you feel you can share, group में share करें, it's fine. Yeah. Okay. So let's close this one. Discard. Still working? Yes. Okay, so this is our next module in the course. Let's see. Remember I told you in the first lecture this course is divided into 3 parts. Yeah, the magic part, seeing the learning concept, जो अभी तक हमने किया है, broader है ये. Yeah, so I wanted you to have a good idea of the landscape. परसेप्ट्रॉन से लेके मशीन लर्निंग का खुद अपना लैंडस्केप, वेयर देयर इज कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एंड मॉडर्न मशीन लर्निंग, all of that, and then the language tool that is used, a bit of Python, and before that we saw the neuron, the brain, the ant colony, the learning thing जो एक broader level पे हमने उसको देखा, yeah, for algorithms and organisms. Next module, mathematics, that enables that learning, right? And then the last part where we'll combine these two to bring together the, and for that I've already given you hints. हमने वो जो बनाए different मरी वाला या उसे, there are already hints in there for the mathematics of learning. Yeah. So now we are starting this guy, the middle one. Okay. So अगर इससे पहले वाले मॉड्यूल तक मैथ वाले परेशान थे, तो अब इस मॉड्यूल में बाकी लोग परेशान हो गए, ठीक है. बट माई एम इज़, जैसे मैंने कहा, दिस कोर्स इज़ अबाउट 3-4 दरियाओं को कूजे में बंद करना है. सो माई एम इज़ टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स दैट आई बिलीव आर क्रिटिकल फॉर अ रिसर्चर इन दिस फील्ड्स, राइट. सो मेरा मकसद आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना नहीं है, उसमें तो कितने कोर्स होते हैं. गिलबर्ट स्ट्रैंग हैड डन अ ब्यूटीफुल जॉब, उसने तो हर चीज़ रिकॉर्ड भी कर दी. या बट आई विल फोकस ऑन ideas that I believe you need clarity on. Maybe you will see ideas that you know but in a new light,
okay, and eventually of course in the third module जब मैं actual फिर वो equations I will write if two planes are separable or not. Is it possible to find a linear classifier between two sets of data? When I write the theorem, फिर आपको बेहतर समझ आएगा, right? So we are going to use all the maths that we are going to look at here. So broadly speaking, machine learning का जो math है, yeah, it's basically machine learning वैसे और किन fields पे है? It's based on physiology, human brain की understanding, neuroscience पे है. Then it's based on human behavior पे भी है, learning के behaviors पे. It's also based on programming a lot, coding बहुत करनी होती है इसमें, right? Nobel Prize वालों ने ये भी show कर दिया कि it's based on physics also, right? कुछ लोग नाराज़ हैं, लेकिन बहरहाल I think this is true, क्योंकि वो हॉपफील्ड का जो आइडिया है वो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से आता है. सो क्या उसमें क्या बुराई आप, राइट? अब मैथ्स में तो नोबेल होता नहीं तो फिजिक्स में दे दिया, ठीक है, वरना ये मैथ से करीब ज़्यादा बनता है, राइट? सो ब्रॉडली स्पीकिंग फॉर मैथ, ये मैं मैथ का सिर्फ पिलर्स दिखा रहा हूँ. सो दीज आर द 3 पिलर्स मेरी असेसमेंट में. यार समवन एल्स मे राइट देम बिट डिफरेंटली, पर वो फिर ओवरलैपिंग ही होगा, कोई और नाम होगा थोड़ा बहुत. देयर इज लीनियर अलजेब्रा. And within linear algebra, although in this course and your textbook there are separate chapters, but they are basically all linear algebra. Linear algebra, analytical geometry, vector calculus. ठीक है, तीनों linear algebra ही हैं basically. So there is probability, yeah, and lastly क्या है? हैं? Mathematics. तो ये क्या है? हैं? कौन सा? जियोमेट्री. वो एनालिटिकल जियोमेट्री लिनियर अलजेब्रा में मैंने उसको डाल दिया, ठीक. कैलकुलस या उसकी जो हमारे लिए एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइजेशन, यस, या. सो और यही चीज़ें हमने अब जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है, मेजर मॉड्यूल, उसमें हमने ये चीज़ें करनी है ज़्यादा, राइट? सो हाउ इज़ इट बिल्ट ऑन दीज 3? आई विल गिव यू अ वेरी वेरी ब्रीफ रिप्लाई. बड़ा लंबा चौड़ा रिप्लाई हो सकता है, बट आई विल कीप इट सिंपल. नाउ अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग डील्स विद लीनियर कॉम्बिनेशंस, ठीक है. ये आपने ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट. याद है परसेप्ट्रॉन? या ये क्या है? व्हाट हैपन्स? यू हैव द इनपुट, दे आर वेटेड एंड देन सम्ड. या ये क्या चीज़ है? इज इट नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनपुट्स? है ना? तो and you could write it nicely if you define a vector w like this. जिसमें you put the weights w1, w2, w3, w4, yeah, and then another vector x where you put the inputs x1, x2, x3, x4. वो transpose, so you know can be multiplied, and then if you put it together यही नहीं आ जाता दोबारा. So बेसिक जब उसका यूनिट ही जो बेसिक यूनिट है, दैट इज ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस. सो व्हाई नॉट लीनियर अलजेब्रा? चाहिए होगा, राइट, अंडरस्टैंडिंग उसकी. नाउ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस नेचुरली शो अप इन मशीन लर्निंग. हाउ इज दैट? लुक, द नेटवर्क, they have shown these by colors. These nice illustration by Jeremy Jordan. You can visit his website. काफ़ी अच्छा उसने दिया हुआ है. So colors are like different weights, otherwise we will write them as W11, W12 like that, yeah. But notice these links between them, all of them, they have their weights, right? This is your input, some biases to correct this thing, and then all of these is again making systems of linear equations, right? And this is just one input. ये तो x1, x2, x3 वेक्टर है ना, एक इनपुट वैल्यू दी है, उसके अंदर 4 फीचर्स हैं, या. बट व्हाट इफ आई हैड टू गिव 4? फिर तो ये और मैट्रिक्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, 1000, या. हाउ टू एफिशिएंट? नॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग इट लाइक दैट, इट्स अबाउट सॉल्विंग इट एफिशिएंटली, या. सो जब लिखेंगे लीनियर अलजेब्रा की फॉर्म में तो फिर सॉल्व भी लीनियर अलजेब्रा के टूल से ही होगा, right? So actually the whole story starts already here when you decide okay, I'm going to, what gets here is going to be a linear combination of these guys. हर एक पे आपने तय किया हुआ है ना, फिर आप एक्टिवेशन उसके बाद लगाते हैं वो जो नॉन लीनियर फंक्शन है, या.
But before that, and in many other steps, you're going to formulate as this thing. Then there are lots of parameters to handle. Abhi Python dekhte hue we said one variable. But when we wanted to handle a lot of variables, what did we do? We went to collections, list, set, tuple. Yeah. So in mathematics, simple mathematics, when you have lots of parameters to handle like that, matrices, vectors, they naturally show up. Yeah. So here, now you can see a neural network as a collection of two things. There are weights on every connection, right? And each one of them has to give its activation output. Yeah, क्योंकि पहली लेयर पे सिर्फ इनपुट को वे किया जाता है, बाकी अगले लेयर पे किसको वे किया जाता है? उन लेयर्स के आउटपुट को. उन लेयर्स का आउटपुट क्या होता है? हर लेयर का आउटपुट उसकी एक्टिवेशन है जो वैल्यू उसने दी. या कितने वेरिएबल हैं सिर्फ इसके अंदर नजर आ रहे हैं? ग्रीन, और अभी पीछे इनपुट तो दिखाया ही नहीं है. या सो lots of parameters to handle. Again, naturally, they can be handled by matrices, vectors, linear algebra formulations. Now, not only that, the cost function, याद है? Vocabulary, अब यहाँ फ़ायदा होगा अगर आपने रिवाइज की हुई है. अगर नहीं की हुई तो फिर सिर्फ मुझे ही फ़ायदा होगा. याद है cost function क्या था? Right? So, yeah, it's the function that tells us where the best value should align. Yeah, it's the yardstick. इसके against हम decide करते हैं क्योंकि वैसे universal best का कोई meaning नहीं होता. Yeah, so now when all that is done, the desired output, let's say y, you will compare it against the actual output and the desired output. Yeah, now that will be the cost function, and they will also be defined on vectors, right? और इसमें ये जो दो लाइनें ये क्या है? Norm है. So you will need understanding of metrics, measures. Yes. So वो ज़रूरत पड़ेगी आपको. Now we don't just want to write a cost function. We also want to optimize these weights or the whatever the different values by this cost function. So you will need vector calculus. पड़ेगी ज़रूरत उसकी, right? So we will need to do that. Now, where is the second pillar? अभी तक जो मैंने बताया वो सारा का सारा mostly linear algebra and third pillar था optimization, वो जो vector calculus आ गया. Yeah. So here probabilities will be needed to handle randomness, weight relation model behavior, for example here. Now, in most cases we will use randomized initializations, yeah, for the weights. So हमें randomness की समझ होनी चाहिए. Not just that, the observations will have randomness in them. Okay, जो आप data record करेंगे उसके अंदर variations होंगी, uncertainty होगी. कैसे? Is there one picture of a car? एक कार की कोई एक दुनिया में कार, ये कार है, ये आप दिखाएंगे मशीन लर्निंग को, बस ये है. ऐसे तो नहीं है ना. Variations हैं. सेम कार की तस्वीरें चार लेंगे ना, उनमें भी वेरिएशन है. ऐसे ही है ना. So there are variations. You want to work with those variations and then generalize what's common, what doesn't change, what's the unique part here. Yeah. So we want to work with uncertainties and extract from them things that are deterministic or fixed. Yeah, that don't define a car. अगर कार थोड़ी सी गंदी है तो गंदी कार है वो, लेकिन कार है. Right? So there are variations or randomness in, so we need to be able to deal with probabilities. We will also adopt probabilities, probabilistic formulations in different contexts. ये कौन सी चीज़ बनती है? You have data points at plus and you want to find a curve that will fit. क्या है ये? Regression. Yeah. So notice here. Now one could say, okay, I have these data points. There's your curve. Sorry, ये इधर से. Yeah. Is that smart? Yeah, overfitting जिसको हमने discuss किया था. Yeah. So it's going too much for every variation. Yeah. So we want to be able to handle it smartly. Which parts, which points I shouldn't bother about too much, or what should I do about those uncertainties, those variations. Yeah. So we will often want to write equations
in probabilistic formulation, what's the probability of getting the output y which I got? Training जब होती है तो आपको data पता होता है. What's the probability of getting these guys, the y's, given some x's and my model parameters? Yeah, मैं अभी ये पढ़ाने नहीं लगा आपको ये maximum likelihood. Yeah, but what I'm showing you is that we will often want to make our algorithms work with probabilities, right? So that will, now when you will try that, it will lead you back to having to use linear algebra and इसको solve करने के लिए actually आपको linear algebra चाहिए. Yeah? Now you may be wondering, okay, ये तो solve हुआ है, अब मैं मज़ीद क्या linear algebra. आप नया पेपर पढ़ेंगे ना, उनमें भी इसी तरह की इक्वेशंस के अंदर कोई वेरिएशन होगी, कोई एप्सिलॉन डाला होगा, कोई थोड़ा, then you need to be able to understand those, yeah, ताकि आपको उसकी रिसर्च सारी समझ आए. In reducing dimensions, याद है dimension reduction we discussed, किस में आता था ये, conventional machine learning या neural networks? Mostly conventional में आता है, right? So there you will need to be able to decompose matrices, yeah, and you will need again a lot of linear algebra to be able to find these matrices. This is your input, and you want to find something that will reduce the dimensionality of the input. Then you'll need to use different linear algebra tricks, study the properties of the matrices, yeah. और जितनी आपको उसमें समझ होगी उतना ज़्यादा आप उसके साथ efficiently you can work with that. Now, as I said, these are just small examples of the overall field of machine learning, the math in machine learning. सिर्फ एक आपको मैंने बहुत overall सा idea दिया है, ठीक है? Otherwise, सारी machine learning, again and again, the formulations will be in linear algebra. They will need optimization, and the linear algebra, the vectors will have probabilities in them, uncertainties होंगी, random vectors होंगे, yeah. There ऐसे नहीं है कि पूरे random होंगे, but there are randomness, variations, yeah. A car is a car, 50 तस्वीरें भी आप ले आए, yeah, and it's different from an aeroplane, ऐसे ही है ना. तो इसका मतलब despite all those randomnesses, all those variances, there is something which makes it a car, ऐसे ही है. So we would want to use those probabilities and see to extract the deterministic or the unique part from there, yeah. So I'll just give you an idea to start with the linear algebra, then we'll come back to it next time or tomorrow, basically. Poetry of mathematics, आपको शायरी की दुनिया पता है, it creates its own world, right? क्या क्या होते हैं उसमें, characters होते हैं, जगह होती हैं, क्या कोई character पता है शायरी के? हो गया, और राइट, रकीब हो गया, कैरेक्टर्स हैं ना ये, वाइज है, शेख जी हैं, राइट, उनके अपना एक कैरेक्टर है हमेशा क्या होता है, राइट, किस लिए यूज़ होता है आपको पता है. मैं खाना है, स्पेसेस हैं, अपनी एक दुनिया बनाई हुई है ना उन्होंने, पता नहीं उसका असली से कोई ताल्लुक कितना है, बहरहाल बनाई हुई है, या. सो यू हैव ऑल दैट. नाउ मैथ ऑल्सो लाइक्स टू क्रिएट इट्स वर्ड्स, yeah, and unlike poetry, math wants to keep it meaningful. Yeah. तो हवाई बातें नहीं करनी, जाहिर है वो exaggeration, that's the art of exaggeration, and it does it very well. शायरी वगैरह, they are art of exaggeration, they do it very well, उनका field है. Math का ये काम नहीं है, right? It wants to be, it's the art of precision, accuracy. 10 लोग calculate करें, सबका एक ही जवाब आए, ऐसे ही है ना, वो clarity मांगता है. So the world of mathematics में इस तरह की क्या होती हैं, places and objects होते हैं कोई, right? Sets, numbers, operators, then it has like इधर में खाने हैं तो उधर spaces हैं, right? Rings, fields, all that, yeah. So these are mathematical objects. So like poetry, mathematics creates its own worlds with various entities and their rules of engagement. इनके रूल्स ऑफ इंगेजमेंट होते हैं ना, रकीब और वो दोस्ती तो नहीं करके बैठ जाते, राइट, कर भी सकते हैं लेकिन सो रूल्स ऑफ
पॉलिटिक्स भी आती. So this one, just like the poetry I said, expressions and some objects in them. So yeah, this is an expression. You know these objects in there, right? Coefficient, variable, both basic psi. Now with that we can go beyond single variables, right? तो वो क्या हो जाएगा फिर? Row vectors हो जाएंगे, column matrices, you could have those, collect vectors in there, collect scalars in there. Matrix के बाद क्या आएगा? Tensor, right? So you will have tensor. This is a three-way tensor. You can have a four-way tensor. Basically क्या हो रहा है? Put scalars together, vector हो गया. Put vectors together, matrix हो गया. Matrices together. इससे आगे हम draw नहीं कर सकते, right? वो हम imagine, लेकिन जितनी मर्जी dimensions बनाते रहे imagination में. Yeah. So basically you have another way of saying it is that a scalar is a zero-way tensor. This is a one-way tensor, two-way tensor, and यहाँ से हम इसको normally tensor कहना शुरू कर देते हैं, three-way tensor, but they are also tensors, yeah. Or you could say a three-way tensor is a three-dimensional vector or two-dimensional matrix. Different नामों से आप कह सकते हैं उसको, right? So up to here you have matrix algebra, and beyond this you need tensor algebra, which of course takes this as a special case, so it covers all of that. Yeah. So this is again the things the mathematics creates. Yeah. But goal अलग है. Create math भी अपनी चीज़ें ही करता है, right? But physics अपनी चीज़ें for example create नहीं करती. Light है, physics उसको पढ़ रही है. Yeah. Maybe physics wants to make a new form of light, like laser हमने बनाई. Yeah. But mathematics is more abstract in that sense. Yeah. Now so here you have it again, variable, vectors, arrays or matrices, and then you can generalize those to general I, J, K, L, M, and how many dimensions you want, it's up to you. And of course Python lets you create any of those. Yeah, उसके अंदर options मौजूद हैं. There's point, line, plane, hyperplanes, those kind of things represented by that. So let me check the time, otherwise अभी है थोड़ा सा. So to save it, we'll continue with this. One of the key objects in पहले हमने देखे हैं simple variables, vectors, ये सारे क्या कहते हैं, डेटा को sort of handle कर रहे थे. या ये भी वही continuation है उसकी. Set क्या होता है? सारा मिक्स हो गया, समझ आ गया, well distinguished वगैरह वगैरह. Yeah. So a set is a collection, ठीक है, well defined. It can be concrete or abstract ideas. So it's kind of a collection of mathematical objects, right? You have that collection, fine. Distinct होना चाहिए, yeah. So some operations or symbols related to sets. Usually we define the set by this in mathematics. Intersection, union, इनमें से कोई symbol है जो आपको मुश्किल लगता है? पता होंगे सारे, right? Basic है ये. Subset, superset, all that. Proper subset, not a proper subset. क्या होता है proper में और improper subset? सारे वही होते हैं. हाँ, तो improper जो है बिला वजह का बनाया यानी वो पूरा वही होता है ना. तो इसलिए improper सी बात है. क्या जरूरत थी बना, वो है ही वो, right? So that's it. Then you know about union, complement, all that. पता है आपको Venn diagram बहुत basic है, मेरे वाला कॉलेज में भी पढ़ते हैं शायद और फिर यूनिवर्सिटी में. So ये सेट सेम है, डिफरेंट है? क्यों? या तो वो मैटर नहीं करता ना. सेट इज डिफाइंड बाय इट्स एलिमेंट्स, राइट? ऑर्डरिंग किसी का मैटर नहीं करता उसको. So these are the same set. Now some familiar sets, numbers के, right?
So you know the natural numbers, sometimes we have a separate name for the 0 including whole numbers, but normally we can just say natural numbers are 0 1 2. Yeah, so integers क्या है, you know that. Rational numbers क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है. तो फिर पाई को 22/7 क्यों लिखते रहते हैं आप? अप्रॉक्सीमेशन, राइट. Yeah, so that is a school approximation. सही, it works fine. कुछ decimal place तक उतर ही 1 या 2 तक चलता है, right. Real algebraic सुना हुआ है? Algebraic numbers. Basically, algebraic numbers are numbers which are roots of polynomials, right. Real algebraic means those roots of polynomials which are real. Yeah. So फिर बाकी सारे जो पूरा का पूरी लाइन क्या है, रियल नंबर है. ईच ऑफ देम इज अ सेट, या इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ दिस इज हाउ थिंग्स आर. दिस इज द बिग गाय हियर, रियल, या वो पूरा का पूरा, या इनसाइड इट इज आर रियल algebraic numbers which are roots of real roots of non zero finite polynomials. या कुछ conditions नहीं होती ना. हो सकती है ना सर, जैसे देखें x प्लस ए इक्वल 0 है, तो x ए की कोई भी वैल्यू ले लें वो रियल लाइन से, तो वो x सॉल्यूशन होगा इसका. x प्लस ए. There are these transcendental numbers, right, which are not solutions of any polynomial, right. So जो आप बता रहे हैं ना, this part doesn't fall in. बाकी सारे हैं उसके अंदर, algebraic, real algebraic, all of them are here. Rational, integer, natural, all are there. But the real number line also includes non-algebraic numbers, which we call as the transcendentals. Transcendentals are always irrational. तो irrational की दो क्लास हैं, सही है. One class is कुछ ज़्यादा ही irrational, ठीक है. So it's a helpful construct. ये नहीं है कोई इसमें कोई बहुत magical, but it helps. वो number theory में it helps a lot, right. So right, so you have the real numbers, transcendentals. So irrational जो है यहाँ पे ये, right. So irrational number क्या होते हैं, cannot be written p upon q form, yeah. But decimal में इनकी क्या definition थी? फ्रैक्शन जो है वो इन्फिनिट भी होती है और रिपीट नहीं होती, राइट. पैटर्न नहीं है उसके अंदर. सो यू नो द रैशनल, real algebraic, I already told you. Transcendental, subset of irrationals that are not algebraic. So square root 2 is irrational but not transcendental because it's a root of some. Again, what's the condition? Non-zero polynomial of finite degree with integer coefficients. Yeah. So that is what you have there. अब of course the यहाँ पे तो real number set सबसे बड़ा लग रहा है, yeah, but it's not. Yeah, it's just a part of a, if you go into plane then complex आ गया. Yeah. Now inside complex you have again, लेकिन idea वही है सारा का सारा mostly, right. Things, yeah. Before we were looking at this part, right, this part. Now you include, so imaginary और complex number में क्या फ़र्क है? Right. Right. So complex number is a general term, which means it has a real part and imaginary part. So imaginary part is the imaginary, right? जिसका real part 0. Yeah. So it's like the proper orthogonal of real. क्योंकि real का imaginary part 0 होता है और imaginary का real part 0 होता है. दोनों आ जाएं तो जो बड़ी class है complex numbers, right? So this is what we have. So this I think we can do next time. Predefined operations on these things. Yeah.